We all begin with the recitation of our past presidents. I request Professor Prashant Gupta sir, Professor Prashant Gupta sir, and Mr. Rajkumar Kalyan sir, to kindly felicitate our past presidents, please. Our chief guest has arrived. All are requested to kindly take their seats. So we begin the inaugural by felicitating our past presidents of IAMM. Professor Sonal Saxena, Professor Prashant Gupta, Professor Rajkumar Kalyan to please do the honors.
So we have our chief guest here with us. All are requested to please stand on their places. Good evening, everyone. On behalf of the organizing committee, we welcome you all to the 46th Annual Conference of the Indian Association of Medical Microbiologists, the MICROCON 2023, on this pleasant evening. I request Dr. Aarti Kapil ma'am to please join the dignitaries on the dais. And Professor Sonal Saxena ma'am to please join. So good evening, everyone. On behalf of the organizing committee, I welcome you all to MICROCON 2023. As we all know, it's a prestigious annual event in the field of medical microbiology and infectious diseases that brings together renowned experts, researchers, and clinicians to share knowledge and foster collaborations. On this occasion, we are privileged to have amongst us Honorable Shri Mayankeshwar Sharan Singh Ji, State Minister, Parliamentary Affairs, Medical Education, Medical and Health, Family Welfare, Mother and Child Welfare, Government of Uttar Pradesh as the chief guest. We extend a floral welcome to you, sir. We also welcome our guest of honor, Professor Aarti Kapil, President, Indian Association of Medical Microbiologists. We welcome Professor Sonia Nityanand ma'am, Honorable Vice Chancellor, King George's Medical University, Lucknow. We welcome Professor Sonal Saxena, Secretary, Indian Association of Medical Microbiologists. We welcome Professor Amita Jain, Organizing Chairperson of MICROCON 2023. And we also welcome Professor Vimla Venkatesh, the Organizing Secretary of MICROCON 2023. Thank you all. Light is a symbol of brightness and prosperity. To make this evening a blessed one, we invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. I request all the dignitaries on dais to kindly lighten the ceremonial lamp. Yavan
आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते Thank you all. I now request Professor Amita Jain, the organizing chairperson of MICROCON 2023, to kindly deliver the welcome address. Good evening. Suprabhatam. Dignitaries on the dais, Shri Mayankeshwar Sharan Singh Ji, State Minister, Parliamentary Affairs, Medical Education, Medical Health, Family Welfare, Mother and Child Welfare, Government of Uttar Pradesh, we welcome you, sir. Professor Aarti Kapil, President of IAMM, Professor Sonia Nityanand, Vice Chancellor, King George's Medical University, Lucknow. We welcome you, ma'am. Professor Sonal Saxena, Secretary IAMM, Professor Vimla Venkatesh, Organizing Secretary MICROCON 2023, past presidents of IAMM, and guests in audience who have spared their time to encourage us. Illustrious faculty of KGMU and other institutions, delegates who have traveled far and beyond and are the purpose behind such organizations. Dear students, staff members, friends from media, our educational partners, ladies and gentlemen. It's my privilege and honor to welcome each one of you on occasion of inaugural ceremony of MICROCON 2023. This is an annual event of IAMM, which is nearly 50 years old organization. KGMU, though is an old and prestigious institute, but we are holding this conference for the first time. We are indebted to IAMM for entrusting us with this responsibility. We have tried our best to make this conference a memorable experience. Every microbe matters. 3 words, theme of conference, very cleverly crafted by our own Dr. Sheetal, is broad and inclusive. The theme speaks loud and clear that tiny microbes have proven again and again that they are mightier than human. In this conference, till now, we have already conducted 16 workshops with wide themes, which was supported by faculty and staff of microbiology. We were also supported by teams from SGPGIMS, RML Institute, and our own departments of neurology, pathology, CFAR, and pharmacology. We are going to hold multiple scientific sessions on infectious diseases in coming 3 days, which will be a delight for all those who are working in field of healthcare, not only for microbiologists. I request everyone who is working with patients, who is working in healthcare, to attend these sessions as we have tried to choose best from their field. Ladies and gentlemen, Lucknow is a beautiful city, and it's not only known for its architecture, monuments, tehzeeb, and cuisine, but it is also known for its modernization, development, academic flavor, Ganga Yamuni tehzeeb, and culture. Government of UP, last several years, have done tremendous efforts to make this happen. I just want to narrate a small poem. लखनऊ है तो महज गुम्बदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं. While you are in Lucknow and you find some time, I urge each one of you to kindly explore this amazing city and our campus, which is no less than a perfectly crafted architectural beauty. Ladies and gentlemen, once again,
I welcome each one of you with open heart and open arms, and I'm indebted to each one of you for sparing time to attend this conference. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. Our achievements are shaped by the strength of the foundations we set. Like a circle, the pursuit of excellence has no end. I now invite Professor Sonal Saxena, Secretary IAMM, to kindly present the Secretary's report and conduct the IAMM award ceremony. Thank you. Thank you. Honorable dignitaries on the dais, Honorable Minister, Vice Chancellor Ma'am, Organizing Chairperson and Organizing Secretary, the Honorable past Presidents, delegates, friends and students. At the 46th Annual Conference of IAMM being held at KGMU with the Honorary President Dr. Aarti Kapil in chair, I, Dr. Sonal Saxena, in the capacity of Secretary, request the permission of Chair to begin proceedings with reading of the Secretary report for the year 2022-23. As it is said, coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. Edward Albert Hell said these words, and we've tried to live up to it as microbiologists in the past few years. The memberships of the organization, I'm glad to hear, have risen to approximately 4,000 life members, with 86 student members and 43 new members which were added. A total of 183 life memberships were added this year. I welcome the new members of the EC. This year we have 6 executive members which were appointed new: Dr. Rakesh Singh from JIPMER, Dr. Anupama Kindo from SRMC Chennai, Dr. Saeed Tanwar Alam from GMC Guwahati, Dr. Yogesh Gupta from Jaipur, Dr. Sarita Mahapatra from AIIMS Delhi, and Dr. Sunil P. Lilyani from GMC Dhule. These 6 members represent 6 different zones of our country and have a wide representation. Treasurer Dr. Manoj Kumar and 2 other EC members, Dr. Neeraj Goyal and Dr. S.K. Shahi, have served the association with sincerity, enriching it with their experience, and IAMM wholeheartedly thanks the outgoing members with a huge round of applause for the outgoing members and welcoming the new members of the Executive Committee. The 45th National Conference of IAMM MICROCON-2022 was themed Emerging Microbes and Evolving Microbiologist, which was held at Bhubaneswar in November, and it was commenced with 7 pre-conference workshops and CME at various institutions. The event was attended by a gathering of 1,300 delegates, 600 abstracts were submitted, and multiple awards were given out. The speakers included national and international repute and enriched the audience with their experiences. Regarding the IAMM journal, under the able leadership of Dr. Chandwa, editor, the IJMM has achieved an impact factor nearing 2 after the change in the publishers from Walter Coover to Elsevier. There has been a significant decrease in the turnaround time for publication of articles by moving to a continuous article publication method, which many of our researchers have felt and acknowledged, and there is immediate citation of the article on acceptance, waiving of the author process fees for better acceptability and affordability. The IJMM has become an extremely popular method of research for publishing their research by young and all. The number of issues in a year has increased from 4 to 6, and it has been a massive turnaround from a loss-making to a profit-making body. From this, as the royalty has crossed euro of 10,100, which is an equivalent to 9,068 rupees for the past year. IJMM is now following international research ethics guidelines in consonance with other reputed journals and strictly sticks to the laid down author guidelines for harmonization of all articles, causing an increase in the number of submissions, especially from outside India, highlighting its growing popularity and visibility among national and international results. The steps of activation of the membership have been explained in the newsletter and how have been uploaded on our website, MyAMM.
Now, what does this membership activation do for you? It allows you to access IGMM free of charge if you are a member. I don't think any other organization other than ASM does that. So these have been outlined in the IMM newsletter and they are also uploaded on our website. I request all the members to please visit the website or the newsletter which is posted on the website again, and so that they can activate their membership and access the journal. Members would be able to interact with website vendor if still there is any issue. Now, IIMM runs 2 ICWAS centers, one in North and South. The IIMM ICWAS Center in the South in 2023 has 788 labs attached to it with a total of 86 new participants added in 2023. The center received NABL accreditation as a PT provider in 2018 and has been re-accredited in August 2023. IIMM New Delhi team has also started molecular microbiology ICWAS Tier 2 with effect from June 2023, and for which additional staff etc. have been recruited. And to begin with, 5 parameters have been included in this molecular ICWAS: quantitative assays for HIV, HPV, HCV and CME, qualitative assays for Mycobacterium tuberculosis. Initially, my apologies. Initially, there are only 45 laboratories in the first batch, which should hopefully increase with time. And NABL accreditation for molecular ICWAS will be attempted once a mandatory PT cycle of 1 year has been completed. South Center caters to both viral serology as well as molecular panels. In 2023, a total of 1,009 laboratories participated, with 686 labs participating for various viral, 17 for various immune response screen, and for molecular parameters included 94 for HIV RNA, 140 for HBV, 241 for HCV, 61 for MV, and 131 for qualitative respiratory panel. The academic activities: after the IIMM PG Assembly was conceptualized in 2016 by IIMM Delhi chapter, but in the year 2018 it was adopted by IIMM and it was held in 4 zones of India after due diligence this year also. For North Zone, it was held at AIIMS New Delhi. For West Zone, AIIMS Jodhpur. For South Zone, JIPMER Pondicherry. For East Zone, IGMS Patna. A total of almost 100 students participated in these 4 assemblies. Sorry. The PG assembly was extremely well appreciated by the students, and we thank all course coordinators, Dr. Lalit Dar, Dr. Vijayalakshmi Nag, Dr. Rakesh Singh and Dr. Namrata Kumari, as well as the members of the organizing committee, Dr. Chand Wattal, myself and Dr. Neeraj Goyal for the successful endeavor. IIMM also places on record its thanks to official platinum partner for PG Assembly, bioMérieux, for their generous support. Sepsis webinar, like every year, was held this year on 13th of September with the theme of Sepsis Update, What You Need to Know. It received an overwhelming response with 1,300 plus participants attending the live event, not just from India but also from SAARC countries. There was a lot of talk as to why IIMM does not release any guidelines or guide the responses. So keeping that in mind, IIMM position paper on guidelines for COVID-19 and SARS-CoV-2 infections was released. The paper was published in IJMM under the authorship of Dr. Ravi, Dr. Kapil, Dr. Sanjay Biswas and myself. IJMM PG Masterclass. IIMM has started a PG Masterclass once a month at 6 p.m. from January 2023. All these classes have seen a tremendous success. To increase the accessibility of these classes, a YouTube channel has been created where the content is streamed live and the recordings remain available to the student as per their availability to watch them. This can be accessed at the YouTube IIMM PG Masterclass, and the channel is currently subscribed by 512 subscribers, and all videos have collectively generated more than 4,000 views. I am thankful to Dr. Ravi, Dr. Chakrabarti, Dr. Pallab Ray, Dr. A.S. Walan, Dr. Ritu Singhal, Dr. Camilla Rodrigues, Dr. Poonam Lumba, Dr. Ekta Gupta, Dr. Rakesh Singh, Dr. Rohit Chawla and Dr. Rajni Sharma for sparing their valuable time in teaching these students.
Overall, these lectures have been accepted and have been a huge success, and some of the views and the YouTube views has crossed in thousands. For example, non-culture based diagnosis of fungal infections by Dr. Arunalok Chakrabarti was attended by a mammoth 703 people, and the YouTube views are more than 798. Dr. Ravi's lecture on acute encephalitis syndrome generated more than 249 views, and we had a capacity of 250 that day, with the YouTube views of 891. We also celebrated the Wow Week last week, where Dr. Pallav Ray, Dr. Rajni Sharma and myself delivered 3 talks that was full to capacity. 99 joined because we had a Zoom for 100 people, and till date it has generated more than 300 views. I'm very much thankful to Dr. Aarti Kapil and to past presidents Dr. Pallav Ray, Dr. Arunalok Chakrabarti, Dr. Sherwal, past secretary Dr. Satish Patil, and Dr. Mantesh Nagmoti, and my team of executive members of IAMM for your support. I am also very thankful to my faculty at Maulana Azad Medical College and my residents in particular for helping me out and for giving me the time to continue the activities for IAMM. Thank you to all the members for having a faith in me during this year, and I extend my sincere thanks and congratulations to all members of the organizing committee of MICROCON 2023, especially Dr. Amit, Dr. Vimla Venkatesh, for their incredible hard work. I personally and on behalf of IAMM welcome all delegates, faculty and students to participate in all the proceedings and activities and enrich yourself academically here at Lucknow to make it a grand success. Thank you. I request you, Madam, to kindly conduct the IAMM award ceremony. Paul Coelho said, there is only one thing that makes a dream impossible to achieve, the fear of failure. And today we honor certain people who never had this fear of failure, and they went ahead and conquered everything. So I welcome you all for the annual award ceremony of the prestigious IAMM Awards. I request the IAMM President, Dr. Aarti Kapil, to honor the awardees, and I also request the Honorable Minister to honor our awardees. For the first award, that is IAMM Endowment Oration Award, I request Dr. Ranganathan Iyer, who is the awardee of this award, to come on the dais, and I also request our President, Madam, to award. Sir, Kai, is he? I request sir to please be seated on the chair. Dr. Ranganathan Iyer acquired his training in medical microbiology at the AFMC Pune in 1993, followed by DNB in microbiology, and diploma in pathology and bacteriology in 1997. He became a fellow of Royal College of Pathologists in 2007. He initially joined the Seth GS Medical College and KEM Hospital, Mumbai as a lecturer, and soon shifted to Breach Candy Hospital, where he worked for over 8 years. He joined the Global Hospital, Hyderabad in 2002 and Rainbow Children Hospital Group in 2007, establishing a clinical microbiology and infection prevention service for solid organ transplant recipients and pediatric patients, respectively. His major areas of work revolve around clinical infection management of ICU, MDR gram-negative infections, coccidian parasitic infections in immunocompetent infant, shigellosis, invasive pneumococcal infections in children, complicated urinary tract infections, and pediatric tuberculosis. The department at Rainbow Children Hospital has established a parasitology service and a pediatric tuberculosis service, which is the first in the private sector, and is currently engaged in establishing an OPAT services. He is also contributed to the pneumococcal network, both within and outside the country, as well as adult and pediatric
Peritoneal Dialysis Society for Prevention of PD infections. He has over 45 publications with 21 of them in international journals and has been invited as guest faculty for many symposia. He was the General Secretary of IIMM from 2010 to 12, President of IIMM Telangana, Andhra Pradesh Combined State Chapter from 23-24, and the member of National Academy of Medical Sciences in 2009, and received the ACM Oration in 2017 and Dr. K. Rajalakshmi Oration of IIMM TAPC in 2022. He has a serious passion for South Indian classical music, has acquired a graduate degree from University of Madras, and is currently pursuing his Masters of Arts MA Indian Classical Vocal Music from the University of Madras. An astute clinical microbiologist, a clinical student, a keen student of medicine and pathology with a focus on infection management, a typical Aquarian, a friendly hardliner with honest commitment to patient care. Now this prestigious IIMM Endowment Lecture Award is being conferred for his dedicated services and contributions in the field of medical microbiology in India on behalf of IIMM on 23rd November at the 46th National Conference of IIMM here at Lucknow. A huge round of applause for our body, please. Thank you, sir. Harry Truman said, "It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit." So now I call upon Dr. B. L. sir, an awardee of H.I. Jhala Memorial Award, to please come on the dais. Dr. B. L. Cherwal's journey as a healthcare leader is defined by pioneering contributions towards the expansion of medical facilities and improvement of government-run healthcare systems and research in microbiology. Sir is presently working as Director Professor Microbiology at Lady Hardinge Medical College after serving as Medical Superintendent for Vardhaman Mahavir Medical College, New Delhi, and was instrumental in establishing bone marrow transplant unit, pediatric hemodialysis, and next generation sequencing. Under his leadership, first IVF baby was delivered at Safdarjung, first successful heart transplant, and first robotic kidney transplant was performed. He has led various institutions like Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi, Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, Delhi State Cancer Institute, Chacha Nehru Bal Chikitsalaya, GTB Hospital, Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, and Dr. RML Hospital at Delhi. Under his leadership, RML Hospital achieved the entry-level NABH accreditation, a milestone for any government hospital. During his directorship, he developed Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital into a state-of-art 650-bedded COVID-19 facility with 400 ICU beds, the need of the hour in 2020, and was the first hospital in Delhi to provide COVID care. The first post-long COVID clinic and the first response center for COVID-19 patients was also opened at Rajiv Gandhi. Later on, first open heart surgery was done during his tenure, and this hospital received Silver Scotch Award in 2018 and the Bronze Scotch Order of Merit for e-hospital implementation for 2018.
Under Director CNBC, he was instrumental in starting Cochlear Implant Molecular Lab and Early Intervention Center. At RIMS Ranchi, Sir was instrumental in establishing Open Heart Surgery, Trauma Center, Dental College, Neonatology Department, and it was adjudged the most promising medical college in Eastern India by Asia Education Summit and the second best emerging medical college in 2016 by India Today. Sir has worked as Deputy Director General Medical at the Ministry of Health and Family Welfare, where computerization of all India level counseling for MBBS, MD and postgraduate courses, where he was instrumental in it. He's also been a governing body member of the National Board of Examination and has chaired its ethical committee. He was the president of IIMM in 2019, Secretary IIMM and also Joint Secretary IIMM, and has served President of IIMM Bihar and Jharkhand chapter as a founder president and also the Secretary IIMM and President IIMM Delhi chapter. He was instrumental in reviving IIMM Delhi chapter and starting its annual conference MICROCON in 2009, and was also the organizing secretary of the 36th National Conference held at LHMC in 2012 and the organizing chairperson when it was held in RIMS Ranchi, the 41st conference in 17. He has received Double Helical National Award in 2021 for outstanding work in providing care with empathy during the COVID-19 pandemic, DMA Distinguished Service Award in 2018 for outstanding contribution in healthcare, and Dr. R.A. Bhujwala Award for Best Outstanding Scientific Work in STI and Other Diagnostic Microbiology in 2017. He was honored as Corona Warrior by Honorable Speaker of Delhi Assembly. Now this prestigious Dr. H. I. Jhala Award 2023 is being conferred for his dedicated services and contributions in the field of medical microbiology in India on behalf of IIMM on 23rd November at the 46th National Conference of IIMM at Lucknow. As I call the awardee of the S.C. Agarwal Award, the words of Albert Einstein echo in my mind. Only those who attempt the absurd can achieve the impossible. So now I call upon Dr. Pragya Yadav, awardee of Dr. S.C. Agarwal Award of IIMM. Dr. Pragya Yadav. Dr. Pragya Yadav is currently Scientist F and in charge of Biosafety Level 4 Laboratory, Asia's first state-of-the-art facility to handle high-risk pathogens at the ICMR National Institute of Virology. She has been working in the field of public health for the past 2 decades. Her expertise ranges across fields of virology, molecular biology, serosurveillance, epidemiology, bioinformatics, microbiology, biosecurity, biosafety, emerging and re-emerging pathogens of pandemic potential, outbreak investigations due to known and unknown pathogens, development of serological and molecular diagnostics for novel pathogens, and preclinical small and large animal studies on evaluation of vaccines. She has extensively worked on disease-causing viruses of public health importance that include SARS-CoV-2, Nipah, Crimean Congo hemorrhagic fever, Ebola, Zika, Casanur forest disease, buffalo pox, monkeypox, Bunia virus, and novel viruses. Her expertise helped in setting up diagnostic assays, which helped in identifying the Nipah outbreak of Kerala 4 times, 18, 19, 21, and 23.
in many other outbreaks of high-risk pathogens. The proactive BAT survey of India has shown Nipah's presence, and she has been instrumental in getting it on track. In the COVID-19 pandemic, she worked on diagnostics and whole genome sequencing, isolation of variants, development of animal models to understand pathogenesis, immune response and disease activity, and development of the whole virus inactivated vaccine with hamster and non-immune primer challenges. She had contributed to the understanding of pathogenesis, transmittability, vaccine efficacy of these variants in vitro as well as in vivo, and is a task force member and technical consultant of WHO, ICMR, DBT, and many other such organizations. She has received multiple awards from ICMR, National Academy of Medical Sciences, NACI, Oxford University, Governor of Maharashtra, and Ministry of Culture. She is a reviewer for more than 40 journals, associate editor of Frontiers Journal, ASM and Virology, and has published more than 300 papers in peer-reviewed journal with 9,200 citations and 2,900 impact factor. She is listed at the top 2% scientist of Stanford and Elsevier. Now, this prestigious Dr. S.C. Agarwal Oration Award 2023 is being conferred for her dedicated services and contributions in the field of medical microbiology in India on behalf of IAMM on 23rd November at the 46th National Conference of IAMM here at Lucknow. Thank you. Nothing in the world is worth having or worth doing unless it means effort, pain, and difficulty. Dr. U.C. Chaturvedi Lifetime Achievement Award is being conferred to Dr. Nancy Malla ma'am. Ma'am is not, could not make it to the conference, but I'll read her scroll, and it can be received by Dr. Sumita Khurana in her absence. Dr. Nancy Malla obtained MBBS degree from Punjab University, Chandigarh in 1968 and completed MD Microbiology from PGI Chandigarh. She has worked as faculty member at Srinagar, SKIMS Srinagar, and from 76 to May 1986, and Department of Medical Parasitology, PGIMR, from 86 to 12. She retired as Professor and Head, Department of Medical Parasitology at PGIMR, Chandigarh. She was awarded British Council Fellowship in 1989 and received training at the London School of Tropical Medicine and Hygiene, London. She is a Fellow of Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. She is the recipient of Kanishka Oration Award in 1999 by ICMR Delhi, Dr. B.P. Pandey Memorial Oration Award in 1999 by the Indian Society of Parasitology, Dr. H.I. Jhala Award by IIMM in 2007, and by the Indian Society of Parasitology Lifetime Achievement Award in 19. She was presented Musilia Shatter Distinguished Service Travel Award Honorable Mention by ASM in 2010 and has served IAMM as member, Executive Council, Associate Editor for IJMM, Treasurer, President, and has organized the National Congress of IAMM in 1999. She was Editor-in-Chief for Journal of Parasitic Diseases, Indian Society of Parasitology from 2001 to 5 and is on expert panel for multiple scientific committees and has been reviewer for many international and national journals. She has carried out 30 research projects and has published more than 150 research papers. She is a life member of about 10 national scientific societies and member of 15 international and national scientific associations and has participated in more than 80 national and international scientific conferences. Now, this prestigious U.C. Chaturvedi Lifetime Achievement Award is being conferred for her dedicated services and contributions at IIMM on 23rd November at the 46th National Conference of IIMM here at Lucknow. Dr. Sumita Khurana will receive it on her behalf.
health issues, ma'am could not be here with us today. Congratulations to all the awardees. As Robert F. Kennedy said, only those who dare to fail greatly can achieve greatly. So with these words, I would now bring an end to the IMM award functions for 2023 being held at this conference, MICROCON 2023 at Lucknow. Thank you. Thank you, madam. Congratulations to the distinguished awardees. We all are really inspired by your achievements. Now we proceed further. A good leader is someone who can help people see the invisible and believe in the incredible. With these words, I invite Professor Nityanand, madam, Honorable Vice Chancellor KGMU, to kindly address and enlighten the august gathering. Thank you. Mananiya Mayankeshwar Sharan Singh Ji, the State Minister for Parliamentary Affairs, Medical Education, Medical Health, Family Welfare, Mother and Child Welfare, Government of Uttar Pradesh. Professor Aarti Kapil, who is the President of IAMM, Professor Sonal Saxena, who is the Secretary, Dr. Amita Jain, the Organizing President of this meeting, of this conference, Professor Vimla Venkatesh, the Organizing Secretary, all the past presidents of IAMM. I can see, I was told by Dr. Amita Jain that all of you are seated in the first row. My respects to all of you. All the esteemed faculty members who come from all over the country to share their expertise and knowledge. All the faculty members of KGMU. The delegates, again, who've come from all over the country. Students, staff members, and friends from media. At the outset, on behalf of the King George's Medical University, I would like to extend a very warm welcome to all, both to this beautiful university which has heritage buildings and to the city of Lucknow, which is known for its cuisine, for its historical buildings, and of course for its etiquette. I'd like to congratulate all the 4 people who have been awarded today. Their citation was very, very encouraging, I would say that very, very inspiring citations of all 4 of them. So many congratulations to all those who have been felicitated today. I also would like to congratulate Dr. Amita Jain and Dr. Vimla Venkatesh for bringing this very important conference to King George's Medical University and to Lucknow. It's really remarkable that you have been instrumental in getting this conference to our university. I believe there have been 3 days of workshops, and from tomorrow, the main conference is going to start. COVID has already brought microbiology to the forefront of medical sciences and medical research, to medicine and both medicine and medical research. And the
two burning problems of emerging microbes. That's why every microbe matters is a very appropriate theme of the conference. So one of the most important emerging problem of emerging viral infections, whether it's COVID, whether it's Zika, whether it's other viral infections which are emerging. And the second, which is on MDROs, multi-drug resistant organisms. I can see both are going to be addressed in this conference. I would like to say that I am a bone marrow transplanter and a clinical hematologist. And I face day in and day out the problem of having patients presenting. You know, patients have undergone multiple cycles of chemotherapy and then they come for a transplant or for further chemotherapy. They already harbor, if you do, there are so many studies now which show that if you do a routine stool surveillance, they already harbor multi-drug resistant infections, organisms. Not infections, but organisms. And when they become neutropenic, the infection goes into the bloodstream. If there is any breach in the mucosa, leads to bacteremia. Imagine bacteremia by multi-drug resistant organisms and sepsis. And then it happens at a time when the counts are very low. There are MDROs in the bloodstream, and we don't know what to do. We just do not know what to do. Because blood counts take time to recover. At the best, we can give granulocyte transfusions. But then there's nothing else that one can do. So this is a problem which is becoming very, very important. And I'm very happy that it has been addressed in the workshop, and there are multiple lectures in this direction in this conference. I remember when I was over, a KPC was identified, and the whole ward was shut down. There was so much of panic in the hospital, Karolinska Hospital, that the whole ward was shut down, that a KPC has been identified. And here, every other day, we find organisms like KPC being identified. So this is a looming threat to the human race. There is need for proper antibiotic stewardship, need to prevent infections by MDRs. So I'm very happy that you are addressing this issue. Both you will address. I wish all the participants a very good stay in London and a very good conference. I know this is one of the very big conferences in the country where all people, all the microbiologists gather together. So wish you all good luck. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am, for your motivational words. We now request the dignitaries on dais to kindly release the conference souvenir. This meticulously crafted keepsake captures the essence of our event and will serve as a lasting reminder of the moments that we share. एंटर भैया खड़े ना हो ना थोड़ा सा और दबा लो थोड़ा और दबा लो Abstract book on this occasion, as we pledge to become an eco-warrior to save paper and save people. These documents from now on will be downloadable from the MICROCON website.
Professor Aarti Kapil, President, Indian Association of Medical Microbiology, to shower her blessings on it. Respected dignitaries on the dais, respected teachers, my seniors in the hall, my colleagues, dear students and friends. It's a pleasure today to be here and also welcome you all to this 46th annual conference of IAMM in the city of Lucknow with its rich heritage and the culture of Tehzeeb. And for that, I'm very thankful to the organizing committee of KGMU under the able leadership of Dr. Amita Jain. Incidentally, as ma'am has also mentioned about antimicrobial resistance, which is one of the threats facing us, the world is celebrating Antimicrobial Awareness Week. And so we all know that one of the approaches we are moving towards to tackle this is through One Health. And so while I was coming down the road from the airport, I could still see some boards mentioning the theme of G20, Vasudev Kutumbakam. So I was reminded of the fact that how much applicable it is to the control of AMR and these microbes who matter, because one earth, one family and one future, they are also part of that one earth and they are also part of that ecosystem. And therefore, any imbalance of that ecosystem or the climatic changes, the earth, which affects the earth, also affects these microbes. And once they get affected, they may adversely affect us, the human beings, as we also saw during the COVID pandemic and also the other emerging infections. So therefore, I hope that with the advances of technology, artificial intelligence, of which so much is being discussed with euphoria and sometimes reservation, let's hope that we are able to use technology, we are able to use the machines in the Amrit Kal with the vision of India moving towards this advancement while keeping the context of clinical relevance and human intelligence and the ability of human creativity to have such technology in place and move ahead to be prepared, to have our laboratory prepared, to be able to face any threat of emerging or re-emerging pathogens. So I wish you all the best and look forward to all of you being a part of this academic feast. Thank you. Thank you, madam, for your motivational words. Udyamen hi siddhanti karyadena manorathe. Goals are achieved only by hard work. I now invite Honorable Shri Mayankeshwar Sharan Singh Ji, the chief guest of today's function, to enlighten us with his words of wisdom. Professor Aarti Kapil Ji, President, Indian Association of Medical Microbiologists. Professor Sonia Nityanand Ji, Vice Chancellor, King George Medical University, Lucknow. Professor Sonal Saxena Ji, Secretary, Indian Association of Medical Microbiologists. Professor Amita Jain Ji, Organizing Chairperson, MICROCON-2023. Professor Vimla Venkatesh Ji, Organizing Secretary, MICROCON-2023. सबसे पहले तो मैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इस एसोसिएशन की बैठक में आप लोग आए लखनऊ,
मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। लखनऊ में आपका स्टे आरामदायक रहे। जो यहाँ का कल्चरल जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको भी आप लोग घूमें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये 3 दिन का समय लखनऊ में आप सबका बहुत बहुत बढ़िया गुजरेगा। I am feeling very proud and privileged I am sharing dais with 5 ladies who are the best in their field. NIC की कुछ माइक्रोबायोलॉजी में कुछ महिलाएं ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। जो 4 लोगों को सम्मानित किया गया है उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ख़ासकर पूनम जी को जिन्होंने जो कोविड की टीम में भी, वैक्सीनेशन की टीम में भी शामिल थी, और मेरे मन से, मेरे हृदय से भी ये निकल रहा है, खासकर सभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को एक ह्यूमन के नाते और ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमैनिटी आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक्स कहना चाहूँगा। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के परिश्रम से जो नई नई एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल या एंटी जो भी कह लें आप, जो आप लोग इजाद करते हैं, उनकी वजह से जो पूरी दुनिया में जानें बचती हैं, उसके लिए पूरे विश्व की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा अभी भी बहुत रिसर्च वर्क पड़ा। पता नहीं कितने वायरस, पता नहीं कितने बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में हम लोग को जानकारी ही नहीं है। भारत इस विषय में थोड़ा हम लोग पीछे रहे हैं। जितना ज्ञान मुझे है, पोलियो का ड्रॉप आने में भारत में 100 साल लग गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आप सबके परिश्रम से कोविड का वैक्सीन हम लोग समय पर बना पाए। आजकल विशेषकर उत्तर प्रदेश में हम लोग डेंगू से बहुत परेशान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब के रहते हुए इस परेशानी से उत्तर प्रदेश दूर होगा। बहुत जल्द उसका भी कोई ना कोई एंटी वैक्सीन आप लोग ज़रूर बना लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारी, और विशेषकर आप लोगों ने देखा होगा कोविड के बाद से, बल्कि कोविड के समय से ही माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य की तरफ जिस तरीके से ध्यान गया है, मेरे ख्याल से पिछले 3-3.5 वर्षों में हेल्थ में इतना खर्चा भारत में कभी नहीं किया होगा। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को लखनऊ आने के लिए आभार प्रकट करता हूं। मुझे पता चला ये 46th वो है, उसके लिए मैं और मिलजुल कर यहाँ पर जो समस्याएं, अब मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, जानकार नहीं हूँ, मैं पता नहीं आप लोग को क्या भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि अगर हम लोग किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाते हैं
तो वो ये कहता है कि ज़रा ब्लड टेस्ट कराओ, जब फलाना पता नहीं कितने तरह के अब टेस्ट आ गए, अब तो भगवान जाने बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन इन सब का इजाद आप ही लोग करते हैं। आप सब रिसर्च करते रहें, नई नई चीज़ों का इजाद करते रहें, और सारी दुनिया में वो बाद में पहुँचे, पहले भारत में पहुँचे। इस आशा विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद भरे शब्दों के लिए धन्यवाद सर। I now request Honorable Vice Chancellor to kindly felicitate the dignitaries on the dais as a token of our gratitude towards them. I request you, Madam, to please step forward. I also request Professor Amita Jain and Professor Vimla Venkatesh to please join, ma'am. Thank you. We now request you, ma'am, to kindly felicitate Professor Aarti Kapil, President, Indian Association of Medical Microbiologists. Thank you. I request you, ma'am, to kindly also felicitate Professor Sonal Saxena, Secretary, Indian Association of Medical Microbiologists. Thank you, ma'am. I now request Professor Amita Jain and Professor Vimla Venkatesh, ma'am, to please felicitate our Honorable Vice Chancellor. Thank you, ma'am. I now request Professor Vimla Venkatesh, ma'am, to deliver a vote of thanks.
Let us be thankful, let us be grateful to the people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. This is a line from Marcel Proust, a French writer of the 20th century. And today I am really very, very privileged to give thanks to all those wonderful people who have really made us very, very happy. Shri Mayankeshwar Sharan Singh Ji, State Minister, Parliamentary Affairs, Medical Education, Medical Health, Family Welfare, Mother and Child Welfare, Government of Uttar Pradesh, who so very readily agreed to be the chief guest for our program and came dot on time. Thank you very much, sir, for being here and very, very importantly, for lightening the mood of this rather somber ceremony where when you just mentioned how the women power in microbiology is showing on this dais. Thank you, sir, for noticing that, because the women in microbiology do work very, very hard. Professor Aarti Kapil, President IMM, a woman of great grace and dignity, we have always admired her more than for microbiology. Of course, she's a great microbiologist, for her humility and dignity, and we are so proud that she has been our president in this past year. Thank you, ma'am, for coming here. Professor Sonia Nityanand, our Honorable Vice Chancellor, KGMU, she has been an enormous source of support for us. And I must mention that when we went to her with the scientific program, she immediately marked some sessions and actually advocated our conference and invited the faculty of KGMU to attend many of our sessions. Her passionate interest in antimicrobial resistance is definitely going to make our conference a big success. Thank you, ma'am, for supporting us. Professor Sonal Saxena, Secretary IMM, she has really illuminated us today with all the great achievements our young microbiologists and old microbiologists have accomplished over the last year. And she has been an enormous source of strength in organizing this conference. She has been helpful and sometimes critical, of course, but I think that was for making sure that we had the best conference possible. Thank you so much for giving us the right tips. I will come to Professor Amita Jain later. I would first like to thank the past presidents who managed to make it to the conference, many of whom are my teachers. Two in particular are my teachers from my alma mater. Thank you, sirs, for being here. It has been an enormous privilege to be able to get you here. Thank you, sir. Thank you, sirs. And ma'am, Dr. Pratibha Narang. Thank you, sir and ma'am. The guests in the audience, thank you all very much for taking time out this evening and being here with us. The delegates, the speakers, the chairpersons who have managed to make it to Lucknow today and who have attended our conference and our pre-conference today, thank you for coming this evening. I know it's your first day for many of you in Lucknow and you must be very tired, but you came and I'm really, really grateful that you could come here. I thank my MBBS students for coming at very, very short invitation. Thank you, children, for being here with us. We wanted to make sure you saw something about microbiology beyond what we teach you in class, and I'm sure you'll gain much from what you learn. Some of you can attend the conference on and off whenever you have time from your studies. Friends from the media, supporting us through the pandemic times, and now when we are out of the pandemic, thank you for being here in helping us and giving publicity to this function. We believe microbiology is a really important subject and we would like you to highlight it in the eyes of the general public. Thanks to our educational partners who have worked really hard with us to make this conference come alive. Thank you, each one of you. And before I close, I would like to thank Professor Amita Jain, our organizing chairperson, who has really motivated us, kept us going through this one difficult year, and helped us to reach here. I would also like to thank Professor Gopa Banerjee, our senior professor, who's going to be here. Dr. Sheetal Verma,
associate professor, is the joint organizing secretary, and she has been like a bedrock of strength. Thank you very much, Sheetal. I can't see you. I think she's out organizing. She's here. Thank you, Sheetal. Thank you so much, Sheetal. Dr. Prashant Gupta and Dr. Rajkumar, our treasurers, they have been on their toes all the time. Thank you again very much. Dr. Suruchi and Dr. Shruti, part of the cultural and the souvenir team, they have worked hard to make everything here come alive. Dr. Parul Jain, our anchor, she again, she is the scientific co-convener, and she is responsible for much of what you see in the souvenir book, getting the abstracts together from all our speakers. Thank you all. I will not go on and on. I have so many people to thank. I thank our SRs, the wonderful staff in our department, the university administration, the finance officer, the registrar, the proctors, the provost, every single person who has handheld us and at the drop of a hat accedes to our every request. Thank you all very much. Thanks to all the staff of my department who have kept the department going even when we could not give them so much attention. Still very, very supportive and held our hand and sort of helped us run the department with very little supervision. Thank you all. And many of them are here today. Thank you all for coming. And we intend to have a cultural program after this, so I'll not go on and on with my thanks. Thank you each and every one of you for being here in this audience today, and I hope you will go away enriched. We intend to have a cultural program after this, and I will let Parul come back and announce it. Thank you all very much. Thank you, ma'am. I now request everyone to please stand on their seats for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai. With this, we conclude with the inaugural ceremony, and in a short while, we'll begin with the cultural event. I request everyone to kindly stay here for the cultural event. We are immediately starting. Dr. Himanshu Vajpayee is a leading Dastan Goi of India. He has performed more than 300 shows in several countries like Singapore, UAE, etc. He is a recipient of several prestigious national and international awards, including felicitation by the former Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind ji, for storytelling. So with this, we take you to Lucknowi Tehzeeb with Dr. Himanshu Vajpayee. Hello. भुला दूं कुछ गलतियां उनकी, कुछ खुद भी सुधर जाऊं, आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, तो मैं भी लखनऊ बन जाऊं. With this, we'll take you to Lucknowi Tehzeeb in a short while. But while the stage is being set, we have with us Umang Kumar Singh. He's our BDS 2021 student. So he'll sing a song for us.
हेलो 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 हेलो। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू। कि बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों। कि बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों। कि गुमसुम है ये फिजाएं जो कहती सुनती है ये निगाहें। गुमसुम है ये फिजाएं है ना। सुहानी सुहानी है ये कहानी जो खामोशी सुनाती है। जिसे तूने चाहा होगा वो तेरा तुझे ये बताती है। मैं मगन हूँ पर न जानूँ कब आने वाला है वो पल, जब हौले हौले धीरे धीरे खिलेगा दिल का ये कमल। के बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों। के बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों। तो गुमसुम है ये फिजाएं जो कहती सुनती है ये निगाहें। गुमसुम है ये फिजाएं है ना। थैंक यू। खुलवा दे। जो ये माइक को लेवल पे ले पहले इसको मेरे मुंह के लेवल पे जी। थोड़ा पीछे पीछे करिए बस ठीक। हाँ तो उसके बाद मैं आ जाऊँगा, मैं अभी नहीं आऊँगा। अच्छा ठीक। It is a tradition of King George's Medical University, Lucknow, to play our Kul Geet at all the events. This Kul Geet has been penned down and sung by our very own faculty members. We'll just play our Kul Geet and the audience is requested not to kindly clap at the end of it. Thank you.
request everybody's attention. शिखर पर चढ़े हम सकल व्याधियों के अनल से लड़े हम करम पथ पे नित पल बढ़े बढ़ते जाए पथिक ऐसे हो पथ पे दीपक जलाए है तप के सुपथ की परिधि के जीएमयू चिकित्सा जगत की धुरी KGMU प्रभाकर सदम के कनक बन के चमके के सुरमई के आंचल में वीणा सजन के सदा मुस्कुराए शिथिलता भगाए जगत ज्ञान मंदिर को तीरथ बनाए सदा निष्कपट हो अमरता का बट हो सदा पापहारी श्री गोमा का तट हो निरामय बनाने का प्रण KGMU विरुज रण में केशव शरण KGMU हृदय थम रहे हो या मुंदते हो आंखें रुधिर जम रहा हो या रुंदते हो सांसें सुमंथन से उपजे हलाहल को पी के उखड़ती हुई श्वास उद्यम से जीते भगीरथ बने ज्ञान गंगा प्रकट हो सदा ऐसे छलके कि अमृत का घट हो गुरु पद कमल की विभा KGMU समुन्नत गगन की ध्वजा KGMU सुश्रुत और चरक की शपथ KGMU कि धनवंतरी का है रथ KGMU शमन रुज सुदर्शन भलय KGMU के प्रेमांकुरों का निलय KGMU असीमित प्रदीपित रहे KGMU कि विद्या की वागा मुकुट KGMU कि विद्या की वागा मुकुट KGMU कि विद्या की वागा मुकुट KGMU I request everyone to kindly please be seated as we are starting with the cultural event. We have with us Dr. Himanshu, who will entertain you with Dastan Goi program. I request all to be please seated and and enjoy this show.
I request the guests and dignitaries standing here to kindly be seated as we are about to start the entertainment. I guarantee you will really enjoy the show. Please be seated so that we can start. सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। डॉक्टर हिमांशु वाजपेयी अपने ही अंदाज में किस्सा गोई करते हैं। दास्तान गोई के नाम से वो लखनऊ की परंपराओं, कहानियों को अपने ही अंदाज में बयां करते हैं। सभी से निवेदन है कि इसका लुत्फ उठाएं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें कृपया। सभी महानुभावों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी विद्वजनों से पुनः निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे आर्टिस्ट आ चुके हैं, स्टेज पे, मंच पे एक बार आके जा चुके हैं। वो आप लोग जब स्थान ग्रहण कर लेंगे तो वो पुनः मंच पे पधारेंगे। मैं डॉक्टर हिमांशु से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि करबद्ध करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत करें। शुक्रिया जी जी जी। अभी ठीक है? नहीं, नीचे आवाज़ तो जा रही है। नहीं, ये जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। नीचे ले आओ बस, जैसे होता है फोटोग्राफ के लिए बस। चेक। तो हाजरीन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि तवज्जो के साथ बैठ जाएं। मुझे एक किस्सा याद आ गया। वो कहीं फिराक साहब जा रहे थे ट्रेन में, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं शायर हूँ। तो जो सामने वाले साहब थे उन्होंने कहा कि भाई आप शायर हैं तो एक शेर सुनाइए। तो फिराक साहब ने कहा कि मेरी शायरी जो है वो नकासे में बिकने वाली गैया नहीं है कि कहीं भी कोई नोआ लगा के और धू ले। तो मुझे अभी ख्याल आ रहा है कि मैं, जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन लें और जो नहीं सुनना चाहते हैं वो, मैं बिल्कुल वो उस तरह के कवियों और शायरों में नहीं हूँ कि पकड़ पकड़ के सुनाऊँ। तो मैं आखिरी बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं
वरना अगर मैं खड़ा हो गया तो फिर मैं दोबारा नहीं बैठूंगा, ये तय बात है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ होने के लिए और मुझे याद करने के लिए कि लखनऊ के कुछ किस्से सुनाऊं। और मुझसे जब कोई पूछता है कि ये किस्से तुम क्यों सुनाते हो, तो मैं यही जवाब देता हूं कि किस्से लखनऊ के इसलिए सुनाता हूं ताकि थोड़ी लखनवियत हम सब में आ सके। तो ये शहर एक ज़माने में अदब का शहर था, तहजीब का शहर था, बड़ी मशहूर थी यहाँ की तहजीब। अब आज का मामला ये है कि ये तहजीब किस्सा गोयों के किस्सों में मिलती है, कुछ अजायब घरों में मिलती है, कुछ जो पुराने लखनऊ के परस्तार हैं उनके शिकवों में मिलती है। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि वो क्या हुआ कि लखनऊ जिन चीज़ों के लिए मशहूर है उनमें से एक है यहाँ की आहिस्तगी, आहिस्ता मिजाजी के लखनऊ वाले बहुत आहिस्ता मिजाज होते हैं, आहिस्तगी के साथ धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे कि ये शो 7 बजे होना था लेकिन 7 बजे से आगे बढ़ गया। तो क्या हुआ कि यहाँ एक टेलर मास्टर हुआ करते थे, उनके बारे में ये मशहूर था कि जब उन्हें कोई कपड़ा आप दें सिलने के लिए, जैसे मसलन आपने 2023 में दिया तो 2028-29 आते आते वो उस कपड़े को सिलने का ख्याल अपने जी में लाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार एक नवाब साहब बहुत तैश में उनके पास आए, उन्हें बहुत डांटा और डांट कर वापस चले गए। तो इस डांटने में आवाज़ ज़रा ऊंची हो गई। तो ये ऊंची आवाज़ में बात करना उस ज़माने में लखनऊ में ख़राब बात समझी जाती थी। तो जब ये टेलर मास्टर वापस अपने घर गए डांट खा के, दुकान घर के बाहर ही थी, तो इनकी बेगम ने उनसे पूछा कि भाई कौन था जो ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। तो इन्होंने बताया कि भाई मैं ही खतावार हूँ, एक नवाब साहब ने मुझे कपड़ा दिया था कई साल पहले, 5-6 बरस हो गए शेरवानी सिलने के लिए, और मैं अब सिल के दे नहीं पाया हूँ। तो इस बार उन्होंने कहा है कि अगर इस साल तुमने मेरी शेरवानी नहीं सिली तो मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। अब इतना सुनना था कि बेगम ने यानी टेलर मास्टर की बीवी ने उनका गिरेबान पकड़ा और 3-4 तमाचे मारे और कहा इतना अर्जेंट कस्टमर लेने की ज़रूरत क्या थी। तो ये लखनऊ का हाल पुराने वक्तों में भी रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि कुछ लखनऊ की जो रिवायात हैं, जो यहाँ की एक विरासत है, उसको बचा के रखा जाए। मैं यहाँ हूँ, ये KGMU का प्रोग्राम है, चौक का इलाका है। आम तौर पे क्या होता है कि लखनऊ की याद जब आती है लोगों को तो खाने पीने से और ज़बान से और आहिस्तगी से और नज़ाकत से और नफासत से और नवाबी चीज़ों से आती है। लेकिन जब मैं यहाँ होता हूँ तो मुझे ये याद आता है कि 1857 में यहाँ लखनऊ वालों ने जो बहादुरी दिखाई थी और जो जंग अंग्रेज़ों से लड़ी थी, उसका भी गवाह यही इलाका था। तो मैं बहरहाल आपको, चूँकि सबसे मशहूर यहाँ की ज़बान है, लखनऊ की जो ख़ासियतें आप किसी से पूछें कि क्या मशहूर है तो वो बताएगा कि ज़बान मशहूर है। तो ज़बान का किस्सा ये है कि लखनऊ वाले कहीं भी जाएं पूरी दुनिया में अपनी ज़बान से पहचान लिए जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लखनऊ वालों के लिए ये होता है कि कोई उनकी ज़बान से उन्हें पहचाने और पूछे कि क्या आप लखनऊ से हैं। तो किस्सा ये है कि एक बार एक साहब कहीं से आए इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए कि भाई लखनऊ की ज़बान इतनी मशहूर क्यों है, इसका इतना चर्चा क्यों है, ज़बान तो बहुत जगह है, तो फिर लखनऊ का ही नाम क्यों आता है। तो वो आए और पहुँच गए अमीनाबाद, और वहाँ उस ज़माने में फूल बेचने वाली औरतें बैठा करती थीं।
तो ये एक के सामने आए, बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, सामने एक फूल वाली बैठी हुई थी कि जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तो इन साहब ने जब उस फूल बेचने वाली मामूली औरत को देखा, तो ये वो ज़माना था जब शायराना गुफ्तगू करने वाले आदमी को, जब शेर व शायरी में बात करने वाले आदमी को बड़ा रुतबा लखनऊ में हासिल था। तो इन्होंने उस औरत को देख के एक मिसरा, शेर की एक लाइन उछाली कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा। इनको ये उम्मीद थी कि मैं बड़ा नवाब ख़ानदान का हूँ, पैसे वाला हूँ, और ये मामूली औरत है, ये इम्प्रेस हो जाएगी, मरूब हो जाएगी। मगर बाजी उलट गई। जैसे ही इन्होंने ये पूछा, ये मिसरा उछाला कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा, उसने अपने तेवर कड़े किए और इनसे पूछा कहाँ के रहने वाले हो। अब ये घबराए, डरे, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं लखनऊ का ही हूं। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा लखनऊ के तो नहीं हो। अब इन्हें और हैरत हुई कि लखनऊ के नहीं हैं तो कहां के हैं। तो फिर उसने कहा कि लखनऊ के होते तो यूं ना कहते। अब ये और हैरान कि यही गुत्थी तो मैं सुलझाने आया हूं। तो इन नवाब साहब ने उस फूल वाली से पूछा कि लखनऊ के होते तो किस तरह कहते। तब उसने बताया कि लखनऊ में किसी खातून से ये कहना कि मैंने तुम्हारा तन देखा, ये शान की बात नहीं है, घटिया बात है। लखनऊ वाला इस तरह से कभी बात नहीं करेगा। लखनऊ के होते तो इस तरह कहते कि सब्ज फानूस में एक शमा को रोशन देखा। तो ये है लखनऊ, ये है यहाँ ज़बान की एहतियात। अभी बात आई 1857 की और जंग आज़ादी की और आज़ादी की तहरीक की। मुझे याद आया इसी शहर में एक किस्सा हुआ कि जब काकोरी एक्शन का मुकदमा चल रहा था। अब ये सारे क्रांतिकारी बिस्मिल और रोशन सिंह और लाहिड़ी और तमाम लोग अदालत में खड़े हैं। सरकारी वकील जो हैं वो हैं जगत नारायण मुल्ला, और वो मुकदमे की कार्रवाई के दौरान अपनी तकरीर जब कर रहे हैं तो उनके मुंह से बिस्मिल के लिए मुलजिम की जगह मुलाजिम लफ्ज निकल गया। मुलाजिम आप जानते हैं एम्प्लॉय, मुलजिम यानी कि जिस पर अभियोग हो, जो अभियुक्त हो। अब बिस्मिल को अपने लिए मुलाजिम लफ्ज कैसे बर्दाश्त होता। मुलाजिम तो मुल्ला जी थे अंग्रेज हुकूमत के। तो जैसे ही उन्होंने कहा मुलाजिम, बिस्मिल ने फौरन उन्हें जवाब दिया, क्योंकि ये मुल्ला साहब जो थे ये उर्दू के शायर भी थे, बिस्मिल भी शायर थे, तो शायरी की ज़बान में जवाब दिया कि मुलाजिम हमको मत कहिए, बहुत तकलीफ़ होती है। मुलाजिम हमको मत कहिए, बहुत तकलीफ़ होती है। अदालत के अदब में हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का किस्सा जो इसी लखनऊ की शाराना फ़िज़ा में परवान चढ़ा। एक और चीज़ लखनऊ की बड़ी ख़ास है, वो है यहाँ का खाना पीना। तो खाने पीनों के बारे में क्या है कि जब लोग लखनऊ आते हैं तो उनकी 3-4 फरमाइशें होती हैं। तो ये किस्सा अभी पिछले दिनों हुआ कि हम अपने दोस्त को जो बम्बई से आए थे, कॉमेडियन है इस देश के बड़े, उनको हम ले गए इदरीस की बिरयानी पे। वो बिरयानी ख़त्म हो गई थी तब तक, तो उसने कहा हुजूर आप वापस आइए, तब तक हम तैयार करके रखते हैं। वापस जब पहुँचे तो चूँकि वो जो इदरीस बिरयानी वाले हैं उन्होंने गरम गरम निकाल कर प्लेट में दी, और इन्होंने ये जल्दी में थे चूँकि, तो उन्होंने बाहरी वो दुकान जो है उसके बाहर एक ठेला था उस पर रख के इन्होंने कहा कि मैं खा लूँगा। अब वो एक बच्चा आया छोटा सा, उसने इनसे कहा रुकिए सर मैं अखबार बिछा दूँ। इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खा लूँगा, मैनेज कर लूँगा। तो वो छोटा सा बच्चा जो इदरीस बिरयानी का काम करता है, उसने इनसे कहा कि हुजूर मेरी भी तो कुछ बात है, आप तो खा लेंगे मगर मैं कैसे आपको खा लेने दूं, आप लखनऊ में हैं। तो ये जो लखनऊ की एहतियात है ये आपको हर जगह दिखेगी, चाहे यहाँ की ज़बान में हो, यहाँ के बयान में हो, यहाँ के खान पान में हो। एक किस्सा और सुनिए। आम तौर पे ये लोग समझते हैं कि लखनऊ नॉनवेज के लिए फ़ेमस है, तो यहाँ सिर्फ कबाब और बिरयानी और यही सब होगा। किस्सा ये है कि यहाँ के जो 2 सबसे मशहूर नवाब हैं,
एक आसफुद्दौला, एक वाजिद अली शाह, ये दोनों दालों के शौकीन थे। तो वाजिद अली शाह को अरहर की दाल इतनी पसंद थी कि उनके नाम पर अभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो अरहर की दाल को दाल सुल्तानी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो सुल्तान आलम वाजिद अली शाह की पसंदीदा दाल थी। और आसफुद्दौला के ज़माने में उन्हें उड़द की दाल पसंद थी। तो उसका किस्सा सुनिए कि चूंकि उनके बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत दानशील थे, बहुत अपनी प्रजा के लिए प्रजा वत्सल थे। तो जिन्होंने ये बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बनवाया वो आसफुद्दौला। और बड़े इमामबाड़े की कहानी आप सबको पता है कि यहाँ एक बार सूखा पड़ा था, अकाल था, लोगों के पास काम नहीं था, तो वो काम देने के लिए उन्होंने ये इमारत बनवाई। तो एक बार क्या हुआ कि उनके दरबार में एक आदमी आया जिसने ये कहा कि मैं बावर्ची हूँ, और बावर्ची भी मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, सिर्फ उड़द की दाल पकाता हूँ। अब ये वो ज़माना था जब बावर्चियों के लिए ये बड़े इम्तियाज़ की बात होती थी कि वो कितनी तरह के खाने पका लेते हैं। तो कोई कहता था कि मैं 70 तरह के पुलाव पका लेता हूँ, कोई कहता था कि मैं 120 तरह के खाने पका लेता हूँ। ये आया तो इसने कहा कि मैं सिर्फ उड़द की दाल पकाता हूँ और मुझे आप नौकरी पर रखिए। तो आसफुद्दौला बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने तुमको रखा। तब उसने कहा कि भाई ऐसे नहीं, मेरी 2 शर्तें हैं, जब आप उन्हें मानेंगे तभी मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगा। तो नवाब साहब ने सोचा ये तो उल्टी बात हो गई भाई, नौकरी मांगने जो आता है उसको शर्तें बताई जाती हैं, यहाँ तो ये अपनी शर्तें बता रहा है, वो भी हमको। खैर उनका जितना बड़ा दिल था उन्होंने कहा ठीक है भाई बताएं। तो उसने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं, एक तो ये कि जब आपको उड़द की दाल खानी हो तो मुझे कम से कम कुछ दिन पहले बता दें, मैं तैयारी कर लूँ। दूसरी शर्त बहुत ख़तरनाक है कि जब दाल तैयार हो जाए मैं आपको जैसे ही बुलाऊँ आप फ़ौरन आ जाएं, लखनवी आहिस्तगी से ना आए। दोनों शर्तों पे हामी भरी, ये साहब नौकरी पर आ गए। कुछ दिनों बाद आसफुद्दौला ने उन्हें खबर भिजवाई कि भाई अब मुझे दाल खानी है। इन्होंने दाल तैयार की और नवाब साहब को खबर भिजवाई। अब नवाब साहब लखनऊ वाले, उनके ज़माने में तो ये मशहूर था कि जब सुबह होती थी तो वो कनीज़ें जाती थी और कहती थी हुजूर बेदार होइए कि सूरज जो है वो उरूज पे आना चाहता है। गोया के नवाब साहब उठेंगे नहीं तो सूरज उरूज पे नहीं आएगा। तो खैर उसने इन्हें खबर भिजवाई, बुलवाया, ये नहीं जा पाए। उसने दूसरी खबर भिजवाई, ये फिर नहीं गए। तीसरी खबर जब भिजवाई तो इन्होंने चलने का इरादा किया, मगर तब तक उस बावर्ची ने इस बात को अपनी शान में गुस्ताखी माना कि मैंने 3 बार खबर भिजवाई तब भी नवाब साहब नहीं आए। तो नवाब साहब इससे पहले कि आते और दस्तरखान पे तशरीफ़ फरमा होते, वो बावर्ची अपनी नौकरी छोड़कर चला गया। उसने इस्तीफ़ा दिया और उसी वक्त वहाँ से चला गया। अब नवाब साहब को जब ये पता चला कि वो बावर्ची चला गया तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने लोगों को भिजवाया कि भाई उसे ढूंढो। वो बावर्ची तो नहीं मिला, मगर पता ये चला कि वो बावर्ची, उसने जो उड़द की दाल पकाई थी, उसे गुस्से में उसने एक सूखे पेड़ यानी जो ठूठ बन गया था उसकी जड़ों में पलट दिया था, और कुछ दिनों बाद वो पेड़ जो है वो दोबारा से हरा होने लगा था। तो ये किस्सा अब्दुल हलीम शरर ने अपनी किताब गुज़िश्ता लखनऊ में बयान किया, और मैंने आपको इसलिए सुनाया कि जब आपसे कोई ये कहे कि लखनऊ में वेज खाने की धूम नहीं है, या वेज खाने पकाने वाले नहीं हैं, या वेज खानों के किस्से नहीं हैं, तो आप ये किस्सा उसे सुनाएं और बताएं कि लखनऊ क्या है। तो ये खाने पीने की बात हो गई। अच्छा, चूंकि आप बहुत सारे लोग नॉनवेज के शौकीन हैं तो मैं एक किस्सा सुना देता हूँ कि एक साहब जिन्होंने ज़िंदगी लखनऊ के होटलों में गुजारी थी, सिर्फ होटलों में खाना खाया था, वो जब मर गए तो पहुँचे स्वर्ग, जन्नत। बड़ी हैरानी हुई कि भाई कोई ऐसा बुरा काम बचा ही नहीं था जो मैंने ना किया हो। यानी मैंने लोगों के पैसे मार लिए, मैंने लोगों से ठीक से बात नहीं की, जब कोई कुछ सुनाने आया तो मैं खड़ा रहा, बैठा नहीं, ये सब मैंने किया, तो मुझे जन्नत मिली कैसे? तो जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो जन्नत के जो द्वारपाल हैं, जो दरोगा हैं, उनका नाम है रिजवान। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, मैं जन्नत में कैसे आया? तो उन्हें बताया गया कि आप में तमाम खराबियां थी, मगर आप में एक दुर्लभ अच्छाई थी।
वो ये कि आपने जिंदगी में जब कभी खाना खाया तो कभी खाने की कोई कमी नहीं निकाली। अब ये एक ऐसी खूबी है जो बहुत बिरले लोगों में होती है। ठीक है साहब, ये जन्नत में आ गए। जब ये जन्नत में आए तो फरिश्ते जो थे इनको जन्नत की सैर कराने के लिए ले गए। तो इन्होंने देखा जैसे ही ये दाखिल हुए तो फरिश्ते लाइन से खड़े हैं, हाथ बांधे, और सब इनके एहतराम में खड़े हैं। इन्होंने पीछे देखा कि एक फरिश्ता खड़ा हुआ है जिसके हाथ में चाबुक है। तो इन्होंने पास वाले फरिश्ते से पूछा कि भाई ये साहब कौन है? तो इन्हें बताया गया कि हुजूर ये आपके लिए नहीं है, वो लोग जो जन्नत की बेअदबी करते हैं उन्हें ये साहब 2-4 कोड़े मारते हैं और जन्नत से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है साहब। अब इनके स्वागत में दावत हुई तो उसमें दस्तरखान बिछा, कई तरह के खाने परोसे गए। ये खाने के लिए बैठे, इनके इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हुए, बड़े अदब से हाथ बांध के। इन्होंने पहला निवाला उठाया, मुंह में रखा, कहा दूसरा निवाला उठाया, मुंह में रखा, इधर उधर देखने लगे। तीसरा निवाला उठाया तो कुछ ठहर गए। तो जब ये ठहर गए, ठिठक गए, तो जो पास में फरिश्ता खड़ा था उसने इनसे पूछा, हुजूर सब खैरियत, आपको कुछ चाहिए, मैं ला के दूं? तब इन्होंने उससे कहा कि भाई वो चाबुक वाले साहब कहाँ हैं, उन्हें आगे बुलवा लो, क्योंकि बिरयानी में लखनऊ के इदरीस वाली बात नहीं है। तो ये लखनऊ का एक मोजज़ा भी है, लखनऊ का एक हुनर भी है कि खाने पीने की बात होती है तो यहाँ की चीज़ें याद आती हैं। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। वो किस्सा हमारी बिरादरी से रिलेटेड है, किस्सा गोई से। तो हुआ क्या कि भाई एक नवाब साहब थे जिन्हें लंबी लंबी हाँकने की आदत थी। हाकिमों को होती है अक्सर, बस ये थोड़े होशियार थे। तो इन्होंने ख़ास इस काम के लिए एक आदमी को मुकर्रर किया था कि महफिल में जब वो ज़्यादा दूर निकल जाएं तो ये साहब, चूंकि सरेआम तो बोल नहीं सकते कि आप दूर निकल गए हैं, बेइज्जती होगी, रुसवाई होगी, तो चुपचाप जब ये ज़्यादा दूर निकल जाएं तो वो साहब इनका हाथ दबा दें तो इनको इशारा मिल जाएगा। ठीक है साहब। अब ये नवाब साहब एक बार अपने शिकार का किस्सा बयान कर रहे थे कि भाई एक बार मैं हिमालय पर गया, वहाँ उन दिनों एक आदमखोर शेर का आतंक था। अब मैंने सोचा कि मैं इस आदमखोर शेर से निजात दिलाऊंगा सारी आलम इंसानियत को। तो मैं चला गया, आधी रात को मैंने खेमा लगाया पहाड़ पर। सब लोग तो साथ वाले सो गए मगर मुझे नींद कहाँ। तो मैं अपने खेमे के बाहर टहल रहा था, मैंने देखा कि नीचे 2 चीज़ें चमक रही हैं। मैं समझ गया कि ये शेर है। मैंने बंदूक उठाई, निशाना बांध के गोली दागी, तो मैं समझ गया शेर का काम तमाम हो गया। मैं पहाड़ से नीचे जब मैंने झांका तो मैंने देखा एक 100 फुट लंबा शेर। जैसे ही इन्होंने कहा 100 फुट लंबा शेर, तो उस आदमी ने जिसे इन्होंने नौकरी पर रखा था उसने दबाया। तो इन्होंने अपने आप को काबू किया। कह लगे मैं फिर नीचे उतरा तो मैंने देखा 100 फुट का नहीं था लेकिन 80 फुट का था। अब उसने फिर हाथ दबाया तो उन्होंने कहा नहीं 80 फुट का नहीं था, 70 फुट का था। अब इन्होंने कहा मैं थोड़ा और नीचे उतरा, मैंने फीता मंगवाया, नपवाया, 70 फुट का तो था। अब उसने बहुत तेज से हाथ दिया तो इन्होंने झल्ला के कहा अम्मा नप चुका। तो ये लखनऊ की किस्सा गोई की अदा है। अच्छा हुआ क्या कि शहर में यहाँ नवाबों के किस्से बहुत मशहूर हुए, लेकिन बात ये भी है कि यहाँ के आम लोग, उनके पास भी किस्सों का खजाना है। तो क्या हुआ, एक मिस्त्री थे, स्कूटर मैकेनिक थे। उनके पास एक आदमी सुबह सुबह स्कूटर लेके आए, कह लेंगे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो वो जो मैकेनिक साहब थे उन्होंने देखा, मुआयना किया, एक पेच कसा और उसके बाद किक मारी तो स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे बताइए आपको क्या फीस दें, क्या मेहनताना दें। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह की बात है, आप जाइए, हो गया। उन्होंने कहा नहीं साहब मुझे बताइए, मैं फीस तो दूंगा आपको। तो उस मैकेनिक ने इनसे कहा कि 5 रुपए हुए। अब जब उसने 5 रुपए बताए तो ये भड़क गए। इन्होंने कहा एक पेच कसा और 5 रुपए बता रहे हो, पेच कसने के 5 रुपए। जैसे लोग हमसे कहते हैं अबे आधा घंटा किस्सा सुनाओगे, इतने पैसे मांग रहे हो। तो इन्होंने कहा कि पेच कसने के 5 रुपए, एक पेच कसा 5 रुपए।
तो वो मैकेनिक जो थे वो लखनवी थे, तो थोड़ा भड़क गए। उन्होंने शाइस्तगी से कहा कि हुजूर, पेंच कसने के 5 रुपए नहीं मांग रहा हूं, सही पेंच कसने के 5 रुपए मांग रहा हूं। तो ये सही पेंच कसने की जो विद्या है, वैसे ये आप डॉक्टर्स के सामने भी आता होगा। बताओ यार, 2 मिनट देख रहे हैं, इतने रुपए ले रहे हैं। तो लोग ये समझते नहीं है कि कोई विद्या जो है उसमें डूबने के लिए कितना समय, कितना श्रम और कितनी लगन लगती है। तो ये किस्से लखनऊ के हैं और कोशिश ये की जाती है कि अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए किस्से आपको सुनाए जाएं और उन अलग अलग किस्सों में भी एक साझा चीज़ जो है, जिसे हम लखनवियत कहते हैं, वो हमारे सामने आ सके कि ये क्या शहर था। यहाँ के आम बहुत मशहूर हैं। तो एक बार एक साहब मलियाबाद चले गए आमों की तलाश में। वहाँ उन्हें एक साहब मिले जिनकी ख्याति ये थी कि वो आम खाने के उस्ताद हैं। अब ये साहब हैरान कि भैया आम खाने के उस्ताद? लोगों ने सितार के उस्ताद देखे, शहनाई के उस्ताद देखे, तमाम चीज़ों के उस्ताद देखे, आम खाने के उस्ताद। तो पता चला कि ये जो आम खाने के उस्ताद हैं, इनके नाम एक बार में, एक सिटिंग में 35 चौसे खाने का रिकॉर्ड है। तो इन्होंने पूछा उनसे कि उस्ताद, आप एक बार में कितने आम खाते हैं? तो उस्ताद ने बताया कि 1 दाढ़ी। अभी हैरान कि ये कौन सा पैमाना है? आदमी कहता है 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम। तो उन्होंने कहा उस्ताद 1 दाढ़ी। तब उन्होंने फरमाया कि भाई ऐसा है, जब मैं आम खाता हूं तो उकड़ूं बैठ जाता हूं और आमों की टोकरी अपने सामने रख लेता हूं, और फिर जब तक आमों के छिलके और गुठलियों का ढेर बड़ा होते होते मेरी दाढ़ी को नहीं छू लेता, मैं आम खाता रहता हूं। तो ये था 1 दाढ़ी आम का किस्सा। अच्छा, उसमें मसला ये है कि आम, यहां सिर्फ आम खाने के उस्ताद नहीं है, आम छीलने के भी उस्ताद हुए। तो इसी मलियाबाद में एक साहब थे जो आम छीलने के उस्ताद थे। उनकी क्या खूबी थी कि जब वो कुएं की जगत पे बैठ के आम छीलते थे, लखनवी दशहरी, तो मजाल क्या कि छिलका बीच से टूट जाए। अपनी चाकू से इस बारीकी से, इस नफासत से दशहरी को छीलते थे कि छिलका बगैर टूटे गोल गोल घूमता हुआ कुएं के पानी को छू जाता था। मगर ये तब की बात है जब मलिहाबाद में आम बहुत होते थे, कुएं बहुत होते थे और कुएं में पानी भी बहुत होता था। अभी तो साहब आँख का पानी नहीं बचा, तो कुएं के पानी का कौन पुरसा लेगा। तो लखनऊ अपनी दोस्तियों के लिए भी बहुत मशहूर है, शायरी के लिए भी मशहूर है। शायरी पे हम बाद में आएंगे। मैं एक किस्सा आपको लखनवी दोस्ती का सुनाता हूँ, जो कि शाम का किस्सा है। वो क्या हुआ कि पार्टीशन के तुरंत बाद की बात है। एक विदेशी आया लखनऊ और एक शराब खाने में गया। तो उसने देखा कि भाई हर तरफ तो हुल्लड़ हंगामा है, जिसे उर्दू में कहते हैं हाव हू का आलम है, लेकिन एक कोने में एक साहब बैठे हैं बिल्कुल तन्हा। और अजीब बात यह है कि 2 गिलास उनके सामने रखे हैं और वो दोनों गिलासों से बारी बारी से शराब पी रहे हैं। तो इसको बड़ा हैरानी हुई इस विदेशी को। ये उनके पास गया, उनसे पूछा कि भाई आप ये 2 गिलासों से शराब क्यों पी रहे हैं? तो ये जो साहब थे, इन्होंने बताया कि भाई मेरा नाम है कालिका, और ये जो 2 गिलास हैं, असल में क्या है कि इनमें से 1 गिलास तो मेरा है, 1 गिलास मेरे दोस्त इफ्तिखार का है। वो क्या हुआ कि वो बंटवारे में चला गया उधर, तो जो कि हमने शराब की शुरुआत साथ में की थी, तो इसलिए अब उसकी याद जब आती है तो मैं साथ में उसका गिलास रख लेता हूँ। अच्छा साहब, वो चला गया वापस। कुछ दिनों बाद लौट के आया तो फिर से वही आलम था, लेकिन इस बार वो साहब वहाँ कुएं में मौजूद थे, लेकिन गिलास एक ही था। तो ये वापस से उनके पास गया, पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, 1 गिलास इस बार कम क्यों है? तब इन्होंने फरमाया कि भाई वो 1 गिलास इसलिए कम है क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत खराब हुई, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम शराब छोड़ दो, शराब तुम्हारे लिए जहर है। तो मैंने तो शराब छोड़ दी। ये जो ग्लास है ये मेरे दोस्त इफ्तिखार का है, मैं उसकी शराब जो है उसकी तरफ से पी रहा हूँ।
तो ये लखनऊ की दोस्तियों का किस्सा है, और इसीलिए इस शहर की एक अपनी शायराना अदा है। और शायरी का तो कहना ही क्या, मीर तकी मीर भी यहीं आए, यहीं उनको सुकून मिला। मजाज लखनवी का यही शहर, आरजू लखनवी का यही शहर, नौशाद का यही शहर। शायरी तो इस शहर की फिजाओं में है, आप उसे महसूस कर पाएँ बस। तो जब मैं ये किस्सा सुनाता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि लखनऊ की वो तहजीब जो कभी थी, जिसकी वजह से लखनऊ लखनऊ बना, वो कहीं बची रह जाए। तो उसमें किस्से तरह तरह के निकलते हैं। एक किस्सा ये है कि भाई एक साहब जो कुछ करते नहीं थे, अच्छी बातें करते थे, उनको लोगों ने बहुत प्रेशर में डाला कि भाई तुम कुछ करते नहीं हो, सिर्फ बातें करते हो, तो कुछ ना करो तो कम से कम कबाब पराठे की एक दुकान खोल लो, अच्छी चलेगी, यहाँ शौकीन लोग हैं। तो साहब उन्होंने खोल ली। अब दुकान पहले ही दिन खोल के बैठे कि एक कुत्ता आ गया और पराठा लेके भागा। अब पब्लिक चिल्लाई कि भाई भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, कुत्ता पराठा ले गया, पकड़ो। अब ये साहब आराम से बैठे थे, इन पे कोई फर्क नहीं। इन्होंने कहा मत छोड़िए, कबाब लेने आएगा तब पकड़ेंगे। तो ये लखनऊ की अदा है कि ये शहर अपनी गति से चलता है, अपने मिजाज से आगे बढ़ता है, अपनी ज़बान से पहचाना जाता है, अपने खानों से दिल में उतरता है, और अपने इतिहास से, अपनी धरोहर से बेइंतहा प्यार करता है। तो हमेशा जब हम ये समझते हैं कि लखनऊ जब फैल रहा है, तो जहाँ तक लखनऊ की भौगोलिक सीमा है वहाँ तक हम लखनऊ मान लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लखनऊ सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वो एक तहजीब का भी नाम है, एक पूरे वैल्यू सिस्टम का नाम है। तो जहाँ लखनवीयत है वो तो लखनऊ है, और जहाँ नहीं है तो वो लखनऊ नहीं है। इसीलिए वो मैं हमेशा कहता हूँ कि लखनवी वो नहीं होता है जो लखनऊ में रहता है, लखनवी वो होता है जिसमें लखनऊ रहता है। तो जब आप कहें कि हम लखनऊ के हैं, तो अपने आप को ज़रा चेक भी करें कि लखनऊ के होने के जो पैमाने हैं, मसलन अच्छी ज़बान, अच्छा खान पान, पहले आप, रवादारी, तहजीब, कौमी यकजहती, सांप्रदायिक एकता, इस पर आप खड़े हैं या नहीं है। तो ये है लखनऊ का किस्सा। अब मुझे ये बताएं, ये तो मैंने अपनी बात की, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से वो, अच्छा ठीक है, ये पर्ची आ जाती है तो पर्ची पकड़ने से पहले मैं समझ जाता हूँ इसमें क्या लिखा होगा। कोई नहीं, तो मैं आपको आखिरी किस्सा सुनाता हूँ इस शहर का, जो मेरा बहुत पसंदीदा है। और आप में से चूँकि ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत सारे लोग लखनऊ देखने जाएंगे। तो इमामबाड़ा देखने जाएंगे, आसफुद्दौला ने बनवाया था। एक कहानी तो आपको गाइड बताएगा, लेकिन जो कहानी गाइड नहीं बताता है वो ये कहानी है कि आसफुद्दौला के जो सबसे करीबी दोस्त थे वो थे हाउलाल। और अंग्रेज़ों ने आसफुद्दौला पर जब दबाव डाला कि वो एक ऐसी संधि करें कि जिसमें लखनऊ और अवध का नुकसान था, तो झावलाल ने उनसे कहा कि बिल्कुल नहीं करना है। तो गरज के आसफुद्दौला ने वो संधि नहीं की। अंग्रेज़ों ने उसका कहर पूरा झावलाल पे निकाला और उन्हें लखनऊ से बाहर भिजवा दिया। तो उनके हिज्र में, उनके वियोग में, सिर्फ उनसे बिछड़ने के गम में आसफुद्दौला का वो हाल हो गया कि वो इतने दुखी हुए कि एक दिन उन्होंने अपने हकीम को बुलवाया और उससे पूछा कि भाई कुछ ऐसा है कि इंसान जल्दी से जल्दी मर जाए। तो हकीम साहब ने कहा कि भाई एक तरीका है कि अगर इंसान हर रोज अपनी भूख से ज्यादा खाए और खाने के तुरंत बाद जाकर नहाने लगे ठंडे पानी में और देर तक नहाता रहे, तो फिर कुछ दिन में वो मर जाएगा। तो आसफुद्दौला का रोज का ये उसूल था कि वो शाम को, सर्दियों के दिन थे, वो अपनी भूख से ज़्यादा खाते थे और फिर जाके हर रोज़
कमर तक गोमती के पानी में खड़े रहते थे। और फिर वही हुआ कि उनकी तबीयत खराब हुई और वो नहीं रहे। तो ये जो इमामबाड़ा है ये असल में असफुद्दौला की तो यादगार है ही, ये लखनऊ की उस दोस्ती की भी यादगार है जिसमें एक नवाब ने अपने एक दोस्त के हिज्र में जान दी थी। और ये जान देना ये एक प्रतिवाद, एक एहतजाज, एक प्रोटेस्ट भी था कि जब एक दोस्त को एक दोस्त के खिलाफ खड़ा किया जाता है। तो ये लखनऊ है। सच है कि जिंदा दिली की कोई किताब है तू, अदब का हुनर का हंसी शबाब है तू, सरे चमन जिसका जलवा है वो गुलाब है तू, लखनऊ आज भी दुनिया में लाजवाब है तू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जिन्होंने ध्यान से सुना। हमारे यहाँ शास्त्र में ये कहा गया है कि दो लोग होने चाहिए, एक सुनाने वाला एक सुनने वाला। बात पूरी है। और यहीं हमारे एक शायर थे, उन्होंने कहा कि हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। शुक्रिया। We now welcome Mr. Raghavendra Pratap Singh, who is an internationally renowned Kathak dancer and is also a student of Dr. Meera Dikshit ji of very famous Lucknow Gharana. He has performed on national and international platforms including Thailand, Dubai, Bangladesh, etc. He has also received many honors which include Santulsi Samman, Rameshwari Kala Samman, etc. We welcome you, sir. तालियों से स्वागत करते हैं। In the meantime, we have a song from Dr. Shreya Singh, who is a BD student in our institute. We welcome you, Shreya. जीनी बिनी है खुशबू तेरी महक रही हूँ, जीनी बिनी है खुशबू तेरी है मैं महक रही हूँ, खटी है मीठी है बोली है तेरी है मैं चहक रही हूँ। तू आदत पुरानी शरारत नहीं है, यकीन तो दिला दे तू है या नहीं है। आए हाय सुबह भी फिसलने लगी, हुई मैं तो हुई शायराना, हुई मैं तो हुई शायराना, हुई गुनगुनाने लगी आशिकाना, हुई मैं तो हुई शायराना, हुई ओ ओ ओ शायराना हुई। चांद चल के चल लिया है, दिन में ही निकल लिया है, ख्वाब तोड़ लाया है मेरे लिए नए, आगे पीछे बाहें खींचे उड़ रही है ये हवाएं, राहें ढूंढ लाई है मेरे लिए नए। शायराना शायराना हो गई मैं शायराना, शायराना शायरा शायराना शायराना। तू हसरत पुरानी तू आदत नहीं है, यकीन तो दिला दे तू है या नहीं है। आए हाय सुबह भी फिसलने लगी, हुई मैं तो हुई शायराना, हुई मैं तो हुई शायराना, हुई गुनगुनाने
जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नील कंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं रहा, तरल गगन पवन धरा धरा शिव। सदैव सर्व मंगला कला देवता, वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशेष है अशेष है प्रशेष है विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हर हर जलप्रवाह पावितस्थले, गले बलं बलान्वितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम्। डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डिनादमर्वयम्, चकार छन्ददन्दवं तनोतु नः शिवः शिवं। चकार छन्ददन्दवं तनोतु नः शिवः शिवं। चकार छन्ददन्दवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय।
महाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरङ्गम्भीरं तुषाराद्रिशङ्काशगौरङ्गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालुबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं नीलकण्ठदयालं मृगाधीशचर्माभरणं कुन्दमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं नमामि भजेऽहं नमामि भजेऽहं नमामि रुद्राक्ष उनके आभूषण हाथ में त्रिशूल शरीर पर भस्म नेत्रों में परमानंद और मुख पर
मुख पर भोलापन। सुंदरता की परिभाषा है वो और आकर्षण की पराकाष्ठा। जीव है वो, ब्रह्म है वो, संपूर्ण जगत निरंजन है वो, विकराल काल है वो ही एक लघु पल है, वो ही अमर है और प्रत्येक मृत्यु में वो ही मरते भी हैं। महापर्वत है वो और सूक्ष्म तृण भी वही है। पृथ्वी वो है, आकाश वो है, बंधन है वो और मुक्ति भी वही है। काल कूट विष और अमृत भी वही है। ज्ञान भी है और अज्ञान भी, प्रकाश अंधकार है। दुविधा है वो और निर्णय भी वही है। शांति भी वो है और समस्त शांति भी वो है। वही ब्रह्मा है और वही नारायण, वही है देवों के देव महादेव।
प्रचंड नाचत कर डमरू डमरू बाजे डमरू डमरू बाजे डमरू डमरू शंकर अति प्रचंड शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू डमरू बाजे डमरू डमरू बाजे डमरू डमरू शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे बाजे डमरू डमरू बाजे शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे व्याग कटे सर्पहार व्याग कटे सर्पहार गले सोहे मूढ़वार गले सोहे मूढ़वार नंदीश्वर शिव शंभो नंदीश्वर शिव शंभो बाजे डमरू डमरू बाजे शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे बाजे डमरू डमरू बाजे बाजे डमरू डमरू बाजे बाजे डमरू डमरू बाजे शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे शंकर Detta
चंद्र तारादितं नमः सात्विकं शिवं pani ni pani ni pani ni pani ga pa 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 ga pa 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 ga pa 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 ga pa pa ga re 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 ga re 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 ga re 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 ga sa 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 ni pa ga pa ni pa ga sa re ni re sa ga pa ga pa ni re sa ni pa ni sa 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 ga ga pa pa ni sa ni pa sa ni pa ga pa ni ni re sa pa ga pa ga sa pa ni ni re sa pa ga pa ga sa pa ni ni re sa pa ga pa ni Om Namah Shivaya सगन जटा हिमगिरि पर कर त्रिशूल डमरू उधारे गंगावतरण हेतु आज शिव विनति करत भागीरथ ठाणे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सगन जटा जटा सगन
दे 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 त्रगन्य दादा तृक दे 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 त्रगन्य दादा घुमड़ घुमड़ कर आई गंगा घुमड़ घुमड़ कर आई गंगा शिव शंकर की जटा समाई शिव शंकर की जटा समाई भटक गई वो जटा जाल में भटक गई वो जटा जाल में सघन जटा की था न पाई सघन जटा की था न पाई मुस्काए तब गरल कंठ से मुस्काए तब गरल कंठ से छोड़ दिया बस तेज बूंद भर छोड़ दिया बस तेज बूंद भर एक बूंद आकाश गई और एक बूंद आकाश गई और एक बूंद भागीरथ पाए एक बूंद भागीरथ पाए एक बूंद धरती पर आई एक बूंद धरती पर आई जो पवित्र गंगा कहलाई जो पवित्र गंगा कहलाई गंगाधर हर 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय जय गंगाधर हर 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय गंगाधर हर 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय It was a beautiful performance indeed. Now I would like to inform you all that we have organized a walkathon tomorrow at 7 a.m. starting in front of the administrative block. So I request you all to please reach the venue at around 6:45 a.m. tomorrow. Thank you. हाँ, मैं यहीं से करूँगा। पहले तो सबसे पहले तो बहुत 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 आप सबका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अमिता मैम, आपको बहुत बहुत आभार। आप हमें इतने वर्षों से देख रही हैं और आपने मुझे इतना विश्वास किया कि आपको लगा कि मैं आपकी इस कॉन्फ्रेंस के लिए परफेक्ट चॉइस हूँ और मुझे लगता है कि मैं और मेरे गुरु के समूह ने सफल मंचन किया होगा। और एक कलाकार मंच पे आता है तो भले वो आधे घंटे के लिए आए, लेकिन उसके पीछे की वर्षों की तपस्या होती है। और ये सब जितने भी साधक हैं, कला साधक हैं, कलाकार हैं और जीवन बिता रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सब अंतिम श्वास तक नाचेंगे और आप सबका मनोरंजन करते रहेंगे, क्योंकि दर्शक का होना कलाकार को पूर्ण करता है और आप सब हमें पूर्णता देते हैं और हम सब आपके लिए कुछ कर पाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में ये सारे मेरे गुरु भाई बहन हैं। हमारी गुरु परम श्रद्धेय डॉक्टर मीरा दीक्षित जी बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं, गुरु हैं। भातखंडे में उन्होंने बहुत सालों तक कार्यभार संभाला। उन्होंने ही इस श्रृंगारी की नींव रखी और हम सब उसके कार्यवाहक हैं, उनकी कल्पनाओं के पंख हैं। तो कलाकार के परिचय में मैं वरिष्ठतम से आऊँगा। सबसे पहले तनुश्री जी हैं, उसके बाद नित्या निगम, शैलेंद्र सिंह, मोहित, तमन्ना सिंह, दीपा और मैं राघवेंद्र। बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत आभार। पुनः मिलने की इच्छा रखता हूँ, तभी विदाई स्वीकार करूँगा।
I would now like to request all our IAMM delegates, faculty and VIPs to proceed to lawn A for the dinner and students and staff to lawn B.